Ayub Baloch is a herder living in remote Hingol area of district Lasbela, Balochistan. He feels that the weather is not the same as it used to be in the past. He is concerned about the changes in the weather patterns and fears that if the trend continued, it will badly affect the natural resources on which he solely depends. Ayub told that from the past few years, Balochistan is suffering from drought and lesser rainfall have made his life harder. Ayub recalls that even temperatures have risen, which is affecting his livelihood. Pakistan contributes negligible to climate change, as it is ranked 135th in the list of carbon-polluting countries, but among the top 10 nations most vulnerable to climate change. German Watch, a think tank in its Global Climate Risk Index 2017, has listed Pakistan the 7th on the list of top 10 countries vulnerable to climate change from 1996 to 2015 on an average. The country lost $3.8 billion and 0.6% of the GDP and suffered from 133 extreme weather events. Climate change is resulting into high glacial melt accompanied by the glacial lake outburst floods and flash floods, prolonged droughts, cyclones, impacts on agriculture, and changes in weather patterns, thus affecting its water resource and other sectors of the economy as well. आपका मुल्क जो है पूरा का पूरा ज़रई मुल्क है। लोगों को जो है आपने अजनास फराहम करनी है, उनमें कमी हो सकती है। पाकिस्तान की जो पानी की जो रसद है उसमें से तकरीबन 70 से 80% जो है वो ग्लेशियर मेल्ट, यानी कि जो हमारे बर्फ़ानी इलाके हैं जो शुमाल में जब वो पिघलते हैं गर्मियों में, तो वो बर्फ़ के पिघलने से 80% पानी आता है। अगर इसमें कमी हो जाएगी, बर्फ़ के पैटर्न में कोई तब्दीली हो जाएगी, तो यकीनन आपकी पानी की जो मिक़दार आपको मिल रही वो भी कम हो जाएगी। Balochistan is geographically Pakistan's largest province that covers an area of 347,056 square kilometers, constituting 43.6% of the total area of the country. It has been the commerce and trade avenue of the East since the ancient civilization of Babylon and Alexander the Great, as well as Muhammad bin Qasim, came to Balochistan.
Balochistan still acquires unique strategic importance geographically, and it can provide Pakistan a gateway to Central Asia and Middle Eastern countries. Miles and miles of sandy beaches, clear blue waters, spectacular mountain ranges enriched with natural resources, biodiversity, and a great marine life. Balochistan has a vast coastline stretching over 760 kilometers from Hub to Jivani on Pakistan-Iran border. The districts of Lasbela and Gwadar fall within the coastal areas of Balochistan. With a human population of over 1 million and abundant natural resources, the coastal districts of Balochistan significantly contribute to overall economic development of the province. Unfortunately, Balochistan is witnessing the impact of climate change, which is making it more vulnerable as compared to other provinces of Pakistan. In the past, cyclones used to come after every 5 to 10 years, but now they are more frequent due to the climate change. According to Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, human-led climate change by the end of the 21st century will likely cause cyclones to be more intense. The coastal districts of Balochistan have witnessed a number of cyclonic incidents in the past. The cyclone Gonu, also known as the supercyclonic storm Gonu, was the strongest tropical cyclone on record in the Arabian Sea. It struck parts of District Gwadar on June 4, 2007, causing strong gusty winds and heavy rains along the coastal areas of the district. दोनों काफ़ी सीवियर किस्म का था, वो जनरेट हुआ बे ऑफ बंगाल से और उन्हें हिट किया पश्चिमी को। तो वो क्योंकि हम दोनों स्टेशन वेदर और टाइडल ऑब्जर्वेटरी को हम वहाँ मॉनिटर कर रहे थे, ऑब्जर्वेटरी बैठे हुए थे, तो वो उस वक्त जो प्रेडेटेड टाइड थी वो जिस वक्त उसने पश्चिमी को हिट किया वो 2.7 मीटर थी, जो प्रेडेटेड टाइड थी, लेकिन जो एक्चुअल टाइड जो हमने वहाँ मॉनिटर की वो 4.7 मीटर तक आई थी, जिससे जो लो लाइंग एरियाज थे उसमें वाटर इंक्लूड कर गया था और जो मड हाउसेस हैं वो डिमोलिश हो गए थे। Vast areas along the coast were eroded and swept away, thus altering the local physiography and ecology. The cyclone Yamain, also referred to Tropical Cyclone 03B, made its second landfall on June 26, 2007, along the Makrand coast near Ormara and Pasni in District Gwadar. At least 380 people died in Balochistan. The subsequent flooding and the rains made 250,000 people homeless and a furthermore 300,000 displaced. Another cyclone Fet affected major parts of Gwadar district
Jivani and Pasni in May and June of 2010. It affected 18,700 in Gavada and 28,600 in Las Bela. इसने तूफानी मचा दिया हद से ज़्यादा। इसका शिद्दत इतना ज़्यादा, यहाँ से लोग भाग भाग कर अपना समझो खुद को निकाला यहाँ से। ये छोटे छोटे किश्तियाँ सारा बाहर फेंक दिया, 2 किलोमीटर तक बाहर जो पानी लेके गया। बड़े बड़े लांचें था जो डूब गया। इसके अलावा ये जो कंधी में इतना जो यहाँ जो झोपड़ी बांधा हुआ था, ये लोग गंद, हम खुद गंद का जो ख़रीदारी कर रहा हूँ, ये 16,000 किलो गंद था हमारा सूखा वाला, ये सारा पानी ने लेके गया। अभी तक उसका कर्जदार में मैं डूबा हुआ हूँ। Another major climatic issue, which is impeding the development and progress of Balochistan, is the recurring drought. Many areas of the province are experiencing this phenomena since 2013, as rainfall has hardly been 1/4 of the usual showers. The Weather Observatory at Pasni in Gavada showed the monthly average temperature variation from 1951 to the year 2000, that the average temperature varies from a minimum of 18.6 centigrade in January to the highest at 30.9 centigrade in June. For decades, the province has faced droughts, with the most severe spell lasting from 1996 to 2004, including the coastal districts, where it was the worst over the last 75 years. That from the past few years, lesser rainfall have made his life harder. It was considered as a major factor behind slow economic growth rate, which went down to 2.6% during the period in the province. Both districts, Las Bela and Gavada, are listed severely affected from drought on 5th and 7th position. The damages from the drought are innumerable, which ranges from the reduced crop output, rangeland and forest productivity, depleted water levels, increased livestock and wildlife mortality rates. When it comes to the agricultural sector in Gavada and Las Bela, wheat, barley, mustard, vegetables and fodder crops are mostly grown. Due to lesser rainfall, the coastal communities have been excessively pumping groundwater for agriculture and domestic purposes. This factor has declined the groundwater level to more than 250 feet, ultimately causing the seawater to pollute the groundwater reserves, causing salinity. ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह हम निकाल रहे हैं उससे काफ़ी हमारी जो ज़खायर हैं वो कम भी हो रहे हैं और पानी का टेस्ट कम्प्लीटली ज़ाया और नुकसान हो रहा है। इससे हमारी फसलात और जो कड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, केले के बागात उनको भी नुकसान हुआ इस सलाइन पानी की वजह से। इसके अलावा जो हमारे दरख्त कुछ ऐसे दरख्त हैं जो सर्वाइव नहीं करते इस पानी से, जैसे हमारे पास चीकू हैं, यहाँ पे 1-2 यहाँ पे पपीते होते हैं, पपीते के अलावा यहाँ पे फालसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सलाइन पानी में वो सर्वाइव नहीं करती हैं। वाटर रिक्वायरमेंट हम बहुत सारा पानी ज़ाया कर देते हैं ऐसी क्रॉप्स ग्रो करने में जो कि बाकी ममालिक में 1 से 5 गुना कम पानी पे
वो ग्रो हो रही होती है। पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी पानी की पाकिस्तान जब बना था उस वक्त 5600 क्यूबिक मीटर था। आज ये लेस देन 1000 हो गए, 800 से 900 से मतलब वो कर रहे हैं, पर लेस देन 1000 cubic meter, which there is a huge difference. This issue has affected agriculture and many farmers have sought other livelihood options. And worst case scenario also triggered migration in the coastal districts. Until now, thousands of communities have migrated in the hope to live in other areas where they can find sweet water and practice agriculture. बरसात पए त असीं आज़ाद आहियूं, बरसात नथी पए त ॿार पाणी हिन में टांकीअ में वञी ॾिसो ज़रूरु ज़ेर उहो न खुॼी पई, इहा बरसाति आहे कान, उनजे वजह सां असीं हिते गिराबाद मरां था। ज़मीन लाइ हेर तकरीबन हिकिड़ो कलाक हिकिड़ो मींहुं वसियो तंहिंमें जे 1 करोड़ खेत थियो। 1 करोड़ खेत मां छा थींदो, न ख़र्चो निकिरे थो, न ॿियो माल बि मरे थो, माण्हू बि मरनि था। Liari is one of those villages in district Lasbela which has suffered the wrath of lesser rainfall and salinity. Up to 90% of village population has migrated in search of better livelihood opportunities, and a few remain in a hope that the situation will get better. सफ़ेद रंग ॾेखारियो की असां होट वठियो, पोइ असांजी हालत अर्ज़ करे सॼी दुनिया बीठी थी वञे। साईं करे हिकिड़ो आवाज़ करे कि अॻिलो जेको नुमाइंदो आहे अचे त उनखे ख़बर पए कि लहर जी आवाम खे तकलीफ़ुनि है। पानी जो ही मीठा था, जब समंदर के पानी इसको लगा, ये सन जो ये ज़मीन का ये मीठे पानी का वो तो खारा हो गया। इन वजह से ये आदमी जो ही इधर रहने वाले थे वो पानी के वजह से भाग गए, कोई उथल, कोई बेला, कोई हब, कोई कराची। अभी बाकी घर हम बचे हैं 6-7, अभी भी इस पानी के लिए हम ये लड़ियाँ करते हैं, जो पानी मुझे मिलेगा तो सब कुछ मिला है। अभी कोई आदमी मरते तो उसके गुस्ल के लिए भी पानी नहीं है, फिर हम इधर रह कर क्या करेगा। वर्ल्ड लेवल के जो SOPs हैं उससे हम 20 से 25% ज़्यादा वाटर इरेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो इकोफर्स हैं वो खाली हो रहे हैं, और बारिशें न होने से वो इकोफर्स खाली हैं, और जहाँ पे लो लाएंगे वहाँ पे सी वाटर जो है वो सब सरफेस मूव करके उन इकोफर्स को फिल कर रहा है, तो वाटर जो है वो सलाइन हो रहा है। On one hand, these coastal districts are experiencing prolonged drought, and on the other hand, facing the wrath of torrential floods. The coastal district of Balochistan comprises of 3 main river basins: Gwadar or Mara Basin, Porali River Basin, and Hub River Basin. In the monsoon seasons, these river basins get flooded and overspills the small dams and the reservoirs. Coastal communities often live in the catchment areas and floodplains. The incoming flood water washes away their property and affects their livelihoods, along with wiping out their dreams of sustainable future. 2003 से जब बारिश शुरू होती है तो मतलब ये सैलाब ही सैलाब आता है। पानी कम पानी नहीं आता, सैलाब आता। हम लोग बच्चे, हम लोग खुद, और जब पानी आता है तो हम लोग खाना भी नहीं खाते रात को, न नींद कर सकते हैं, इतने आवाज़ होते हैं। अभी कितने नदी है, यहाँ से एक नदी ये आती है जिसको जंडड़ा बोलते हैं, आसांदरा बोलते हैं, जंडड़ा बोलते हैं, कुल्लड़ी बोलते हैं, पोराली बोलते हैं। ये सारा नदी जो इस पे आ जाता है पानी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बिल्कुल रास्ता हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग बहुत बिल्कुल तकलीफ में।
Floods represent a story of missed opportunities to capture the much-needed water resource for agriculture and daily use. Among the major climate change issues these people face, sea level rise has emerged as a serious threat. The sea has become their enemy as it is intruding inland and encroaching upon their property and agricultural land. हम लोग की ज़िंदगी में काफ़ी समंदर दूर था बड़ा, ये सारी बाजार थी, ये बाजार बस डूबती गई है, पीछे निज़ाम चलता रहा, आगे डूब रहा है, पीछे बना रहा है, बस ये काम चल रहा है। अल्लाह पाक का निज़ाम है, अभी 5-6 साल हुए, थोड़ा बहुत रुका हुआ है ये। The affected areas along the Makran coast include Dam Bandar, Pasni, Surbandar, Pushukan and Jeevani. Coastal erosion possesses a grave threat to man-made structures, and the phenomena is exacerbated by the deforestation of mangroves, which are under pressure from fuel wood, timber mafia, and animal grazing. Deforestation in Pakistan is going on an unprecedented rate, and according to Food and Agricultural Organization's Global Forest Resource Assessment 2015 report, Pakistan on an average witnessed one of the highest rates of deforestation at 2.1% from 1990 to 2015 on an average. This includes deforestation of mangrove forests as well. The mangrove swamps spread across 7,400 hectares along Balochistan coast and acquire immense importance in the food chain as they provide an ideal habitat for shrimp and marine life. The coastal line of Makran is rich in marine biodiversity. The fish industry supports the livelihoods of thousands of fishermen in Lasbela and Gavada. A report by the USAID highlighted the total fish catch estimated to be 112,642 tons in 2005. And accounts for 68% of the $100 million of foreign exchange which Pakistan earns from fishery exports. बलूचिस्तान कोस्ट पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका फौरी तौर पर नहरों मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिशरीज़ का कैच है बहुत ज़बरदस्त होती है, और यहाँ पे अपवेलिंग जो होती है बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट ऊपर आता है, और ये जो है ना फिशरीज़ के लिए एक ग़िज़ा के तौर पर काम आता है. However, the interconnected nature of ecological marine resource make them extremely vulnerable to the impact of climate change. Studies reveal that climate change impacts on the ocean temperature
coupled with the heat distribution that could alter the migration rate and routes of some marine species. The fisher folk are concerned that those fish species which are more sensitive to warmth would tend to move away from the coastal areas, thus harder to catch and eventually reducing the fish count. पाकिस्तान के जो बहरी इलाके हैं उनमें अब हमने इतनी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वहाँ पे शिकार कर ली हैं, इतनी ज़्यादा मछलियों की हमने काश्त कर ली है कि अब वहाँ पर जो सस्टेनेबल यानी कि पायदार जो है वो मछलियों की सनत जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे जितने माहीगीर जो सनत साथ वाबस्ता हैं उन बेचारों की ज़िंदगी जो है मुतासर हो रही है। इसकी वजह यह है कि कुदरत के जो तरीक़ाकार हैं, जब मछली की एक ख़ास साइज़ हो जाएगा तो आपको उसको पकड़ना चाहिए। अब जाल का जो साइज़ है आप छोटा करते चले जाएंगे तो बच्चे भी उसमें आते जाएंगे अफजाइश के मौके पे आपको जो है। तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि हम जो है हमारी जो न सिर्फ जंगली हयात जो कि ज़मीन पे मौजूद है बल्कि जो आबी हयात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। A recent fish stock assessment survey conducted during the period of 2009 to 2015 by the Marine Fisheries Department with technical assistance of FAO revealed that major fish stock has declined from 40 to 90%. Climate change is a global phenomenon which cannot be controlled overnight. Despite the fact that Pakistan is one of the lowest emission producing countries, but one of the most vulnerable in the world, Pakistan needs to do more on the adaptation front. The best way to cope with the situation is to improve the mangrove forest cover so that the natural defense shield can be improved, which will control the sea erosion on one hand and improve the livelihood on the other. Furthermore, this will help to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius as agreed in the Paris Climate Change Agreement of 2015, to which Pakistan is also a signatory. 50,000 hectares से ज़्यादा प्लांटेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। पाकिस्तान नेवी के साथ कोई 1.2 मिलियन प्लांट्स IUCN दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंध के और बलूचिस्तान के ने मिल के डिफरेंट लोकेशंस पे ये जो कोशिश करें ताकि ये आपको मालूम है कि जो समंदर हैं वो भी कार्बन को अब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और स्पेशली जो मैंग्रोव्स हैं इनका हैबिटेट वो भी बड़ा ज़रूरी है कि ये हो और ये कार्बन को भी अब्जॉर्ब करने के काम और फिर इसको मिटिगेशन के तौर पे भी किया जा सकता है एंड देन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के तौर पे। The coastal areas provide ideal environment for installation of solar and wind energy plants, which will be most cost-effective and less harmful to the environment and beneficial for the locals. Awareness of climate change at local level and a community-based disaster risk management system may also be introduced to minimize the impact of natural disasters. To protect the creek communities, protection walls can serve as another shield in controlling the sea level.
Balochistan has been deprived of development. But after China-Pakistan economic corridor, the situation has changed, and the locals hope that they'll find better livelihood opportunities. Development is the need of all, and it should be done for well-being of the people. But it must be sustainable so that it does not have a negative impact. No challenge possesses a greater threat to the future generation than climate change. Our commitment and persistence can bring about positive steps to safeguard our planet Earth to live for years to come.